हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज में क्या है? फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए is n cross m matrix which is obtained by replacing rows of A with columns and columns of A with rows। ठीक है, अगर हम रोज को कॉलम्स बना दे, कॉलम को रोज बना दे, तो हम ट्रांसपोज, हमें क्या मिल जाएगी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ए टू बी 2 3 -4 5 6 -7, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो कॉलम्स बना देंगे। फर्स्ट रो we will write it as first column, second row we will write it as second column, third row we will write it as third column। तो ये जो मैट्रिक्स थी विच इज 3x2, 3 rows 2 columns, ये क्या बन गई? 2 rows 3 columns। 3x2 मैट्रिक्स क्या बन गई? 2x3। So transpose of an m cross n matrix is n cross m matrix which is obtained by replacing rows with columns and columns with the rows, right? There are certain properties of transpose of a matrix. First property is A transpose ka transpose is A. This is very obvious. If you replace rows by columns, then again columns by rows. If you replace columns by rows and again rows by columns, तो जो rows थी पहले वो rows ही बन जाएंगी और जो columns थी वो columns ही बन जाएंगी। Therefore A dash का dash will be equal to A, right? And second will be K times A ka transpose is same as K times A transpose, right? And third property is A plus B ka transpose is same as A transpose plus B transpose. Fourth property is A B transpose is B transpose times A transpose, right? तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये तो ऑब्वियसली नजर आ रही है कि होनी चाहिए। यहाँ ये इट इज नॉट ऑब्वियस, फोर्थ प्रॉपर्टी इज नॉट ऑब्वियस, बट वी विल डू दी रिजल्ट ओनली। इसका हमने प्रूफ नहीं करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix A m cross n is said to be symmetric if A dash is equal to A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी खुद के ही बराबर हो जाए, then we say that matrix is symmetric matrix। For example, if you have this matrix 1 2 2 4, ठीक है, this is A। if you obtain A dash, you replace rows by columns। this is first row, I will write it as column, this is second row, I will write it as second column। so you can see A is same as A dash, therefore this matrix is symmetric matrix। okay, next is skew symmetric matrix। a matrix A of order m cross n is said to be skew symmetric if A dash is same as minus of A। ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, देन वी से दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव दिस मैट्रिक्स 0 -1 1 0, ठीक है, दिस इज A। if you take its transpose it will be 0 -1 1 0, ठीक है। so what will be this? this is minus sign अगर आप कॉमन ले ले सब में से तो ये आ जाएगा 0 -1 1 0। so you can see this is minus of A, right? therefore the matrix A is skew symmetric। clear? next is theorem number 1। it says the sum of
two symmetric matrices is symmetric, and this is part 1. Part 2 is the sum of two skew symmetric matrices is skew symmetric. ठीक है, दो सिमेट्रिक मेट्रिसेस का सम सिमेट्रिक होता है, दो स्क्यू मेट्रिसेस का सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट. So first property, if you have A and B, two symmetric matrices, so that A dash is equal to A and B dash is equal to B. ठीक है, so you want to prove A plus B is also symmetric, so take its transpose A plus B का dash. ठीक है, by property number 1 it is A dash plus B dash. What is A dash? It is A. What is B dash? It is B. So A plus B का dash is same as A plus B, and this shows that A plus B जो matrix है that is symmetric matrix, right. Next is second part. A and B both are skew symmetric matrices, so that A dash is equal to minus A and B dash is equal to minus B. ठीक है, so what is A plus B का dash? It is A dash plus B dash. A dash is minus A, B dash is minus B. So this is minus of A plus B. Therefore A plus B का जो dash है that is minus of A plus B. Therefore A plus B क्या बन गई? Skew symmetric. Is it clear? Next is next theorem is, if A is a square matrix, A कोई square matrix है means number of rows is same as number of columns. Then first part, A plus A dash जो matrix होती है that is always symmetric, और A minus A dash जो matrix बनती है that is always skew symmetric. Is it clear? Proof. हाँ जी, we want to prove A plus A dash is symmetric, so take its transpose A plus A dash का dash. What is this? A dash plus A dash का dash, because A plus B का dash is A dash plus B dash. Now what is this? It is A dash plus A dash का dash is A. This is same as A plus A dash. So we have proved A plus A dash का dash is same as A plus A dash. So जिसका डैश उसके खुद के बराबर हो तो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक. इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. हाँ जी, A माइनस A डैश, इसको हमने क्या प्रूव करना है? स्क्यू सिमेट्रिक. सो टेक इट्स ट्रांसपोज. व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट इज A डैश माइनस A डैश का डैश, बिकॉज A माइनस B का डैश इज A डैश माइनस B डैश. नाउ व्हाट इज दिस? A डैश माइनस A, बिकॉज A dash का dash is A. This is minus of A minus A dash. So we have proved A minus A dash का dash is negative of this. Right? So this shows A minus A dash is skew symmetric. Right? So next theorem is show that every square matrix can be expressed in one and only one way as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, we have to show that every square matrix can be expressed in one and only one way as a sum of symmetric and skew symmetric matrices, right? So you have a matrix A, right? You can write it as 1 by 2 times A plus A dash plus 1 by 2 times A minus A dash लिख सकते हैं आप. क्यों? क्योंकि जब आप इसका सम करेंगे क्या बनेगा? 1 by 2 times A plus 1 by 2 times A plus 1 by 2 times E dash plus 1 by 2 times minus A dash. ठीक है, so this is 1 by 2 times A plus 1 by 2 times A
प्लस 1/2 टाइम्स ए डैश माइनस 1/2 टाइम्स ए डैश, ये कैंसिल हो गया, a/2 प्लस a/2 दैट इज a, राइट. सो वी हैव रिटन a एज अ सम ऑफ टू मेट्रिसेस, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. नाउ पिछली थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है ये जो मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक और ये जो मैट्रिक्स है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक. दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक and this matrix is skew symmetric. So we have written A as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है. अब हमने ये शो करना है this can be done only one way, right? Means this is the unique representation. इस A को आप किसी sum symmetric और skew symmetric के as a sum of symmetric and skew symmetric matrices से किसी और तरह से नहीं लिख सकते, right? Suppose there is another way. Let A be same as R plus S. A को हमने लिखा है R plus S की फॉर्म में, where R is symmetric and S is skew symmetric. तो हम क्या प्रूव करेंगे? This R will be 1/2 times A plus A dash and this S will be 1/2 times A minus A dash. So that there will be only one way, right? So now what is its dash? R plus S ka dash, that is same as R dash plus S dash. Now you take its sum A plus A dash, that is R plus S plus R dash plus S dash. Now this is same as R plus S plus R dash is R because R is symmetric. S dash is minus S because S is skew symmetric. S or S cancel, it is 2 times R. So what is R equal to? It is 1/2 times A plus A dash, right? Now you subtract the two. A minus A dash किसके बराबर होगा? R plus S minus R dash plus S dash, that is R plus S minus R minus S dash, that is R plus S minus R plus S. S dash is minus S, R और R cancel, so that it will be 2S. So S की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 times A minus A dash. ठीक है. सो हो गया प्रूव यूनिकनेस कि A को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं और वो क्या तरीका है? A is equal to 1/2 times A plus A dash plus 1/2 times A minus A dash, right? हाँ जी. एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं इस क्वेश्चन को लेके. It says if A is 4, 3, 7, 6, 5, minus 8, 1, 2, 6. Express this as a sum of symmetric and skew symmetric matrices, right? So what is the formula? We will write it as A as 1/2 A plus A dash plus 1/2 times A minus A dash. This will be symmetric, this will be skew symmetric. ठीक है. तो A है हमारे पास, A dash क्या होगा? 4, 3, 7, 6, 5, minus 8, 1, 2, 6, right? So that A plus A dash क्या होगा? 4, 3, 7, 6, 5, minus 8, 1, 2, 6 plus 4, 6, 1, 3, 5, 2, 7 minus 2, 6. सम करते हैं इन दोनों का. दिस विल बी 8, 9, 8, 9, 10, minus 6, 8, minus 6, 12, right? So this will be A plus A dash. So what will be 1/2 times of it? 1/2 times A plus A dash. This is equal to 1/2 times 8, 9, 8, 9 minus 10 minus 6 plus 10, 8 minus 6, 12. So that this will be 8. 2 से डिवाइड करना है हर एक एंट्री को, तो ये क्या बन जाएगी? 4, 9/2, 4, 9/2, 5 minus 3, 4 minus 3, 6, right? ठीक है. नेक्स्ट we will find A minus A dash. जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे you will find it will be 4 minus 4 0, 3 minus 6 minus 3, 7 minus 1 6, 4 6 minus 3 3, 5 minus 5 0, minus 8 minus 2 minus 10, 1 minus 7 minus 6, 2 minus minus 8, that is 10,
6 minus 6 will be 0. ठीक है, so what will be half of it? 1/2 times a minus a dash. तो हर एक एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 0 minus 3/2 3, 3/2 0 minus 5 minus 3 5 0, right? So you can write a as sum of this 4 9/2 4 9/2 5 minus 3 4 minus 3 6 plus 0 minus 3/2 3 3/2 0 minus 5 minus 3 5 0. ठीक है, so you have written A as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. For the checking purposes you can also check कि जब आप इसको ऐड करेंगे क्या वाकई A बन रहा है, right? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Next is example number 6. It says for what value of K the matrix 2K plus 3 4 5 minus 4 0 minus 6 minus 5 6 minus 2K minus 3. This is skew symmetric. ठीक है, for what value of K this matrix will be skew symmetric. Solution. Now this matrix will be skew symmetric when A dash will be minus A. This is A. Suppose what is A dash? A dash is 2K plus 3 4 5 minus 4 0 minus 6 minus 5 6 minus 2K minus 3. This is A dash. It is minus of A. Minus of A is minus 2K minus 3 minus 4 minus 5 4 0 6 5 minus 6 2K plus 3. हर एक एंट्री को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ दीज टू आर टू बी सेम, so that this entry will be same as this entry. तो इसको इक्वेट कर देते हैं. 2K plus 3 will be same as minus 2K minus 3. ठीक है, that is 4K will be minus 6. That is K will be minus 6 upon 4. Is it clear? ठीक है. So this is the now you can try the exercise number 5.4. If there is any difficulty in any question, you can ask me in the offline class on Monday, Tuesday. Okay? So ये जब exercise आपकी हो जाएगी, then you will be completing your chapter number 5. Chapter 5 आपका complete हो जाएगा. Is it clear? Thank you.